बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का निजात दहिंदा इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ माइट बी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। मक्का मुकरमा की तारीखी और सकाफती अहमियत से मुतालिक इसका जोग्राफियाई तज़किरा किस तरह कारी की समझ बूझ पर असरअंदाज हो सकता है। तो इसका आंसर है द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का शोज दैट इट इज द लैंड ऑफ ब्यूटी, वास्ट डेजर्ट एंड स्टारी skies. Its beauty inspired poets and eloquent people to preserve its history and culture in poetry and other artistic forms. Thus, its geographical description highlights its historical and cultural importance. ये इसका तर्जुमा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। Question number 2. What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam? इस्लाम से पहले अरबों की सकाफत से मुतालिक उनकी यादाश्त और फसाहत पर जोर देने से क्या जाहिर होता है? The emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggests a culture that deeply valued oral tradition, poetic vision, and artistic expression. They preserved their history and traditions in these forms. Question number 3. What is the importance of the anecdote about Hamad and Caliph Walid bin Yazid? हमाद और खलीफा वलीद बिन यजीद के वाक़ये की अहमियत क्या है? The story about Hamad shows that massive bulk of Arabic poetry and the Arabs' extraordinary memory. It is because of its richness the Arabic was chosen as the language of the Quran. Question number 4. What parallel can you draw between the states of civilization described here and other historical periods of decline and renewal? यहाँ बयान की गई तहजीब की सूरत हाल और अरूज ज़वाल के दूसरी तारीखी अदवार के दरमियान आप क्या मवासलत अखज़ कर सकते हैं? The state of civilization mentioned here is similar to those of European Dark Ages when society fell into deep and moral decay. In both cases, renewal came through a leader or a movement that restored faith and high moral values. Islam reshaped Arabic society while Europe saw change through revolutions. Question number 5. What challenges did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam face in the proclamation the oneness of Allah Almighty, which means Tawheed and the unity of mankind? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वादानियत और इंसानी एकजहती की तबलीग में किन मुश्किलात का सामना किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम faced intense resistance from the pagan Arabs who saw his message as a threat to their belief and authority. He sallallahu alaihi wasallam endured isolation, hostility, and even physical threats. Yet he sallallahu alaihi wasallam continued to proclaim the oneness of Allah Almighty and unity of mankind. Question number 6. In what ways did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इंसानियत को रूहानी और दुनियावी शोबों में बुलंद मकाम पर पहुंचाया? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elevated mankind by promoting spiritual growth through faith and ethics. He sallallahu alaihi wasallam also uplifted humanity in worldly matters by establishing the principle of justice, equality, and compassion. Question number 7. How does the final Quranic verse encapsulate the role and mission of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? कुरानी आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और मकसद का कैसे अहाता करती है? The verse describes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a witness, bearer of good news, warner, and guide. It shows his purpose to guide humanity toward faith, virtue, and Allah's light. Question number 8. How does the author view the pre-Islamic Arab? Write down the example and evidence supporting your inferences.
मुसन्निफ इस्लाम से पहले वाले अरबों को कैसे देखता था और इसे अपने अखज़ करदा नताइज की तईद के लिए मिसालें और शवाहिद कलम बंद करें। Pre-Islamic Arabs were known for their eloquence and strong memory as reflected in their poetry and annual contests. However, their moral decline showed the need for spiritual guidance, highlighting the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam missions to uplift humanity. आगे हम जी वर्ड सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। Unhappy, which means नाखुश. She left unhappy with the results. She felt unhappy with the results. Unbreakable, ना टूटने वाला. The box is unbreakable and very strong. Revisit, दोबारा जाना. The old man could not revisit his favorite places. Disconnect, मुनक़ता करना. Please disconnect the device after using it. Disappear. The rabbit disappeared in the bushes. Kindness. Her kindness to others is inspiring. Comfortable, आरामदेह. The jacket is warm and comfortable. Fearless, बेखौफ. He is a fearless explorer. Washable, धोने के काबिल. This cloth is washable and easy to clean. Readable, पढ़ने के काबिल. The book is easy and readable.